Hey guys, I'm Chandra from THREESTOCKS and today we have traded Bank Nifty option buying की है आज हमने yet again and booked around 27,000 rupees trading both. दो ट्रेड लिए हैं आज हमने, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है बट पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, स्पेशली सेकंड ट्रेड और सेकंड ट्रेड में लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन बायर्स के लिए लर्निंग्स दी हैं, बट उनसे आप कनेक्ट तभी कर पाओगे जब आप पूरा वीडियो देखोगे. तो मेक श्योर यू टेक आउट सर्टेन टाइम और आज की वीडियो के लिए एंड वॉच इट, एंड या फिर आप 2x की स्पीड पे भी देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो नाउ. ऑलराइट ट्रेडर्स, मार्केट ने जो है एक यहाँ से रिजेक्शन लिया हुआ था. इफ यू कैन सिंपली सी हुआ है यहाँ से अच्छा खासा रिजेक्शन लिया, मार्केट ऊपर गया, वापस यहाँ से रिजेक्शन लिया और वहां से अब वापस जो है मार्केट नीचे आ रहा है. राइट, बट आई वाज वेटिंग फॉर इस कि यहाँ पे एक आधी और एंट्री एक इनसाइड पर कैंडल अगर बन जाती है तो आई कैन एंटर राइट ओवर हियर, बट इट सीम्स लाइक वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बन रहा है. राइट, थोड़ी देर मार्केट यहाँ पे रुका भी था, इस कैंडल के अंदर मार्केट रुका भी था, बट जस्ट नाउ इट ब्रोक डाउन लाइक एनीथिंग. And as you can see, options are going down like anything as well, right? And and obviously अगर यहाँ से मार्केट गिरता है तो एटलीस्ट यहाँ पे जब जहाँ पे कल मार्केट ने पहुंच लिया था, ऑब्वियसली कल का जो हमारा ट्रेड था जो ब्रेकडाउन के लिए वेट कर रहे थे वो हुआ, और जहाँ तक हम वेट कर रहे थे कि यहाँ तक तो एटलीस्ट मार्केट आएगा, वो आया भी वहां तक. बट ऑब्वियसली इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम. उनको स्टॉप लॉस खाना था हमारा, तो हमने स्टॉप लॉस दे दिया, कोई इशू नहीं है उसमें तो. राइट, एंड थोड़े बहुत फंड्स मैंने विड्रॉ कर भी लिए हैं, सो जस्ट इन केस आई डोंट गो मोर अग्रेसिव और अग्रेसिवली जाके मैं और पोजीशंस ना क्रिएट कर लूँ. राइट, तो अराउंड 35,000 रुपीज का मैंने यहाँ पे विड्रॉवल भी कर दिया है. एंड बेसिकली व्हाट आई कैन सी ओवर हियर इज कि अब ये रुकेगा नहीं, अब ये सीधे यहाँ तक आ जाएगा. आई वांटेड टू एंटर राइट ओवर हियर बट वी मिस्ड आउट ऑन दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी. राइट, 260 से समथिंग मैं एंटर करने वाला था इसके हाई पे ही. यू कैन सिंपली सी द हाई ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंडल is around 259. Yes, that's where I wanted to enter, but it's totally all right. मेरा stop loss भी यहाँ पे था 225 पे. Right, so yeah, that is what you were waiting for, but it's totally all right, part of the game. If you find any other opportunities, we'll figure out that as well. कोई issue नहीं है उसमें तो. Right, and it seems like कि थोड़ा बहुत support आ सकता है 39,000 से. Right, all right, sorry, I was watching future chart, लेकिन बैंक निफ्टी spot chart में तो it is now trading at 39,000 only. तो देखते हैं ये लेवल पे ये कैसा परफॉर्म करता है. if it goes good all the way from over here, और अगर ये लो भी तोड़ देता है तो फिर एक गैप फिलिंग के लिए एक ट्रेड हमारा यहाँ पे फिर से बनता है. राइट, और अगर हम लोग 39,000 से फिर से सपोर्ट ले लेते हैं जिससे सुबह लिया था हमने, देन ऑब्वियसली अभी देख भी रहा है हमको सपोर्ट लेता हुआ मार्केट, तो फिर देखते हैं क्या होता है. Right, I wanted to enter this particular trade for a target of only like in 50 points. 1:1 का trade I could have managed to take. Right, क्योंकि ये रिजेक्शन होके आ रहा है और यहाँ से रिजेक्ट होके थोड़ा बहुत नीचे आ जाएगा. But it's totally alright. We didn't enter. I was just waiting for a few confirmation. I was not feeling confident कि सीधे जाके मैं quantity add कर दूँ and things like that. I was just waiting for कि क्या हो रहा है, निफ्टी क्या कर रहा है, things like that. So या निफ्टी ने भी सेम चीज की हुई है. निफ्टी में मैं आपको दिखा देता हूँ, निफ्टी ने भी सेम चीज की हुई है, थोड़ा बहुत ऊपर किया और फिर वहां से वापस सेल ऑफ लेके मार्केट जो है नीचे आ रहा है. राइट, नाउ लेट्स सी, लेट्स वेट कि 39,000 पे मार्केट कैसा रिएक्ट करता है. ऑलराइट ट्रेडर्स, मार्केट इज येट अगेन ब्रेकिंग डाउन ऑन दिस पर्टिकुलर कैंडल, और अभी जस्ट हम लोग जो है इसके अंदर ही हॉवर कर रहे थे काफी टाइम से, और द ब्रेक डाउन जो है वो 38,950 900 के नीचे, 39,000 के नीचे है, बेसिकली व्हाट आई मीन. ऑलराइट, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू बाय 39,000 का पुट ऑप्शन with a stop loss of 50 points, 250 quantities. All right, let me just look at the volumes we are receiving. और बेसिकली यहाँ पे हमने काफी देर हावर किया है, अभी जस्ट इस कैंडल का लो तोड़ दिया है जहाँ पे रिजेक्ट किया था. राइट, तो यहाँ से पॉसिबिलिटीज हैं कि अब हम लोग जो है मोमेंटम कंटिन्यू कर सकते हैं. राइट, सो विद द सेम सॉर्ट ऑफ एनालिसिस आई एम गोइंग टू एंटर एट 450 market price. Just give me a moment. What is Nifty doing? We need a support for Nifty as well.
Okay, and if we break down on this particular thing, so what is the next support we have? The next stop we'll be having is around here, so we have enough space to travel to as well. All right, so I'm going to buy this particular thing. All right, क्योंकि 10 पॉइंट नीचे मिल रहा है तो we can enter with 300 quantity limit 40. Just give me a moment. Is it rejecting or what? एक बार मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी देख लेता हूँ. It's totally all right. I am getting in. एक alright, I think I'm gonna enter now at a market price 331 is where we have entered, and थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिख रहा है, ऑब्वियसली यहीं से दिख रहा है हमको, तो थोड़ा सा वेट करेंगे. अभी जस्ट लो तो तोड़ा है हमने एक अच्छा खासा, लाइक यू नो, देखो मार्केट ने ऐसा मूव किया नीचे की तरफ, राइट, यहाँ से एक बार बाउंस करके वापस इस लो को तोड़ दिया, राइट. तो नाउ इज द टाइम कि अब जो है ये मोमेंटम यहाँ से कंटिन्यू करे, राइट. और सेम रीजन से वी हैव एंटर्ड इन अ ट्रेड विद अराउंड 300 क्वांटिटी. हमारा एवरेज प्राइस है 431, एंड अब ऑब्वियसली 400 का स्टॉप लॉस के नीचे जो एक्चुअल स्टॉप लॉस है वो लगाए तो भी चलेगा. 431 पे एंट्री है हमारी इसलिए, राइट. तो ये कैंडल का जो लो है इसके नीचे इज वेयर आई एम गोइंग टू पुट अ स्टॉप लॉस. सो आई एम गोइंग टू पुट अ स्टॉप लॉस एट अराउंड 390. तो एक 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो जाएगा हमारा. एसएल ऑफ 391 का वहां पे लो है, तो उसके 4 पॉइंट नीचे आई एम गोइंग टू पुट अ स्टॉप लॉस व्हिच इज 388 and 388. Sell 300 quantity. We are holding this particular trade with a risk of around 12,000 और 13,000 रुपीज का रिस्क है इस पर्टिकुलर ट्रेड में यहाँ से, राइट. एंड most probably once the days yesterday's low is taken out, या फिर obviously टारगेट भी हमारा वहां तक है, टू बी ऑनेस्ट अगर देखा जाए तो उसके जस्ट नीचे टारगेट है, लेकिन वहां पे हम लोग देखेंगे कि कैसा रिएक्ट कर रहा है, राइट. अगर इस लो को भी तोड़ देता है मार्केट आके सीधे ही, राइट, तो फिर ये गैप फिल करने हम लोग जा सकते हैं. जो यहाँ पे ये जो गैप बचा हुआ है यहाँ पे जो गैप है, ये गैप फिल करने हम लोग जा सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट आई एम वेटिंग फॉर नाउ, राइट. और इसके जस्ट ऊपर ये जो 5 मिनट की कैंडल, 5 मिनट का जो करंट हाई आपको दिख रहा है, इसके जस्ट ऊपर हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है, राइट. सो लेट्स होल्ड ऑन अवर ट्रेड विथ व्हाटएवर वी कैन, व्हाटएवर स्टॉप लॉस वी हैव बेसिकली. ये जो 15 मिनट्स की कैंडल है इसके जस्ट ऊपर हमारा एसएल है. Alright traders, market has moved almost like in 1:1 in our favor. 40 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस है, और अभी जस्ट नाउ ये पर्टिकुलर कैंडल ही लो लगा, हाई लगा के आया है ऑफ अराउंड, पता नहीं यहाँ पे नहीं शो कर रहा है, बट 470 475 के आसपास जाके आया हुआ है, राइट. अब एम आई गोइंग टू ट्रेल माई स्टॉप लॉस राइट अवे इज द क्वेश्चन ओवर हियर. लाइक इज इट अ गुड आइडिया? गिव मी अ मोमेंट. Like, is it a good idea? There's something wrong with this. All right. Is it a good idea? I think it's a good idea, but give me a moment. एक 15 मिनट की कैंडल में देख लेता हूँ. All right. It made a high of around 479 का हाई लगा के आ चुका है, एंड हमारा पीएनएल भी चल रहा था अराउंड 13,000 14,000 के आसपास, राइट. एक बार 5 मिनट की कैंडल्स भी देख लेते हैं. सो प्रोबेबली वेयर वी कैन ट्रेल अवर स्टॉप लॉसेस एट, राइट. वैसे देखे तो हमारा टारगेट अभी तक हिट हुआ नहीं है, तो होल्ड ही करते हैं. होल्डिंग इज द ओनली प्लान एज ऑफ नाउ, नो ट्रेलिंग, नथिंग एज ऑफ नाउ. So let's see how it all goes. एक बार I needed to reach around 490 at least, right? More than 1:1 एक बार हमको दिखे. और just give me a moment. एक बार हम निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं, right? और maybe we can just trail our stop loss about this candle, right? इस कैंडल के ऊपर हम लोग एटलीस्ट स्टॉप लॉस जो है ट्रेल कर सकते हैं, भले हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट ना करें, राइट. तो ये जो 5 मिनट की कैंडल है इसके लो के नीचे इज वेयर आई एम गोइंग टू ट्रेल माय स्टॉप लॉस एट ओवर हियर,
राइट, इसका लो क्या है, जस्ट लेट मी चेक दैट आउट। इसका लो इज अराउंड 417, तो मे बी आई कैन ट्रेल माई स्टॉप लॉस एट अराउंड, थोड़ा सा स्पेस देखे भी चले अगर हम लोग, तो 405 तक तो मैं मेरा स्टॉप लॉस ला ही सकता हूँ, विच विल फ्रॉम थोड़ा बहुत हमारा एसएल मॉडिफाई हो जाएगा, और यहाँ से फिर अगर हमको स्टॉप लॉस हिट होता है तो व्हाट इज द रिस्क वी होल्ड नाउ, 431 is where we have entered, minus 405, 26 points का SL है traders यहाँ से हमारा. So if we hit it right away, it's totally all right, or else we wait for at least 1:2. यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में मैंने मेरा टारगेट लगा दिया है, बट मेजरली मोस्ट प्रोबेबली हम लोग होल्ड करने वाले हैं टिल वी गेट लाइक मोर देन 1:2. जैसे ही मोर देन 1:2 दिख जाता है अराउंड 25,000 के आसपास, we are going to book our trade right away, right? I'm shifting to like in yeah, this one I'm watching at 5 minutes and this one I'm watching at 15 minutes only, right? Our target on this particular thing is till here, जो कल का हमारा लो है वहां तक it should be going, right? It should be giving us momentum at least यहाँ तक, right? And if it gives us momentum till over here, anyways we are going to make more than 1:2, right? अभी भी हमारा more than 1:2 तो receive हो ही रहा है, but let's hold on. Once it goes to like 790 or something, we will plan the trailing yet again. All right, seems good. Also, I have a second thought कि last 2 दिन से we have been losing money, so why not we just book money and close our screen right over here, और फिर कोई और अगर next opportunity मिलती है तो वहाँ पे we can make some money or plan to make some money is also the another thought I'm having over here. Maybe I'm just gonna trail my stop loss back to cost so that यहाँ से और loss लेके नहीं जाए हम लोग, because anyways 485 something पे जाके आ ही चुका है, right? I'm going to trail my stop loss at 432, or just give me a moment. I may book it like anytime soon. All right. Why am I watching this options candle? It seems like rejecting only. I think it's too late now. चलो ठीक है, होल्ड करते हैं फिर, अब इट्स बैक टू प्राइस, सो फायदा नहीं है अभी बुक करके, बट एनीवेज इट सीम्स लाइक रिजेक्टिंग टू अस एज वेल. 15 मिनट्स की कैंडल. All right, I think I'm gonna close my screen now. 465 के आसपास. All right, we are booking more lesser than what we raised and didn't follow the plan properly, but we did this just to gain confidence traders, because we have been losing since last 2 days. और एक 15 मिनट्स पे जब ऐसी कैंडल दिख जाती है फॉर एन ऑप्शन बायर, इट्स नॉट अ गुड आइडिया, राइट? क्योंकि अगर थोड़ा सा भी ये ऊपर जाएगा, जो कि जाते हुए दिख भी रहा है, थोड़ा सा भी ऊपर गया, इट विल हिट अवर CTCSL like anyways, like जाते ही तुरंत वो हिट कर देगा, right? Could I book that 485? We were reaching more than 1:1, but the plan is plan, right? अगर ये जा ही रहा था तो एक ही मूव में, लाइक जैसे यहाँ से यहाँ आया ये, वैसे ही इट कुड हैव जस्ट मूव्ड इन ओवर हियर एज वेल, राइट? सो द नेक्स्ट प्रोबेबल एंट्री, वी आर नॉट येट डन फॉर द डे, राइट? अगर लॉस हो जाता तो वी कुड हैव बीन क्लोज द स्क्रीन राइट अवे. नाउ द प्रोबेबल एंट्री नेक्स्ट कुड हैव वुड बी ऑन द ब्रेक ऑफ दिस सपोर्ट, राइट? या फिर यहाँ से रिजेक्शन लेके जाते हैं या एनीथिंग लाइक दैट, बट एज ऑफ नाउ I am sort of losing my trade right now. Just look at that, traders. Market just reversed, not reversed, but sort of support लिया है market ने वहां से days low से, जो days low यहाँ पे था वहां से अच्छा खासा support लिया है, and एक single candle में ही अगर हम वहां पे stop loss भी trail करते cost to cost, तो इसने hit कर ही दिया होता. Now hope you understand, as an option buyer, you have to plan your exits and change your plans like anything. और जब भी you feel like कि यहाँ से थोड़ा बहुत market retrace करके ऊपर जा सकता है, that is the time for you to exit again. और जब भी market वापस आके low तोड़ेगा and things like that will happen, you can just enter right away over there as well, right? So this is kind of trading
an option buyer should be looking after, राइट? ऐसा नहीं कि ये स्टॉप लॉस है, ये टारगेट है, इधर स्टॉप लॉस या टारगेट। बहुत सी बार आपके साथ हुआ होगा, राइट, कि 10,000 का प्रॉफिट चल रहा था, 10,000 का रिस्क भी लिया था आपने सुबह, लेकिन अब 10,000 का प्रॉफिट चला है, लेकिन उसमें से आप कुछ लेके नहीं जा रहे हो, जैसे हमारे साथ उस दिन हुआ था, राइट? बट उस दिन भी मैनेज की, चलो ठीक है, 4,000 का ही लॉस होगा अब यहाँ से, और उस दिन वी वर वेटिंग फॉर अ गुड टारगेट, राइट, अ वेरी गुड मोमेंटम, विच डिडंट हैपन, राइट, विच डिडंट हैपन, और फिर सेकेंड हाफ में वो मोमेंटम हुआ, राइट? और हमारा जो प्रीमियम था, यहाँ वाला जो ट्रेड था हमारा, इसके ब्रेकआउट पे जो ट्रेड था हमारा, इट वेंट टू लाइक इन 17,000 का प्रॉफिट, केम बैक डाउन, हमने सीटीसी एग्जिट लिया, सीटीसी नहीं, 4,000 के लॉस पे एग्जिट लिया, फिर मार्केट और काफी ज्यादा नीचे आया, तो एनीवेज वी कुड हैव हिट अ स्टॉप लॉस, राइट? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड एज एन ऑप्शन बायर, रिस्क मिटिगेट करते चलो, एंड मेक श्योर जब ऐसा लगे कि मार्केट थोड़ा सा भी रिवर्सल या रिट्रेसमेंट कर सकता है, book your profits right away, and that is what we call option scalping. Alright, traders, market has just broken down the low or हमारे options का high which we were talking about, right? And now we are receiving like in 25 plus 20 points, 15 points. I mean, around 30 points इस particular trade में we are receiving, right? So what I'm going to do is कि वो जो low लगा था इस particular option में, मैं सीधे ही वहां जाके मेरा stop loss trail कर दूंगा, राइट? सो दैट कि अगर यहाँ से वापस मार्केट रिवर्स होता है, क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट को जाना है तो नाउ इट विल गो लाइक एनीथिंग, वापस आके इसका हाई नहीं तोड़ेगा, जैसे कल हुआ था मार्केट में, राइट? ये वाला लो लगाया था, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर वापस इसका लो तोड़ गया। अगर वैसा कुछ होता है तो वी आर आउट ऑफ द ट्रेड एनीवेज, राइट? सो मैं मेरा स्टॉप लॉस जो है इस कैंडल के लो के नीचे लगा दूंगा, विच इज 462, तो अराउंड 455 के आसपास आई एम गोइंग टू ट्रेल माई स्टॉप लॉस एट, राइट? एंड वंस वी रिसीव लाइक, जैसे हमारा प्रीमियम 480, 540, 550 के पास जाता है, we will book our trade as well, we will plan to book our trade as well. 455 is where I'm going to trail my stop loss at. Obviously 462 का उसने लो लगाया, तो जरूरी नहीं है कि मैं 461 पे ही stop loss लगा दूं। At the same point in time I also make sure कि मेरे को उसको space देना है, right? So I'm going to trail my stop loss at 455, right? So now how much risk are we holding on to? We have entered at 475 minus 455, 20 points risk into 300 is the quantity we are in with, 6,000 rupees का हमारा यहाँ पे रिस्क है। तो एनीवेज अगर ये ट्रेड हमारा ऐसे खा जाता है, वी विल क्लोज अवर स्क्रीन राइट अवे एंड विल बी बुकिंग लाइक इन लॉस ऑफ, सॉरी, 6,000 रुपीज का लॉस इस ट्रेड में, एंड विल बी टोटल एमटी में हमारा 4,000 रुपीज का तो एटलीस्ट रहेगा यहाँ से, राइट? So that is what we will be holding on our trade for now. It went to like in 22,000 rupees का profit as well just now, but ये वापस आ गया है for some weird reason. Obviously इसने अगर हमको उस टाइम पे more than at least अगर ये 430 भी चला गया होता तो I would have literally traded my stop loss to cost, but it made a high of just for 519. So we're not trailing that soon any particular trade. Alright, it is, the move is happening with a very good volumes, to be honest. The volumes are literally pretty good, and we are receiving like 29,000 rupees profit as well, more than what we risked actually. So I'm gonna close my screen like right away, right over here. Alright, and we are done for the day, guys. We booked around 27,000 rupees. I know as a move ho sakta hai and things like that. I'm a scalper. If we are, if you find any particular opportunity from over here, we'll enter once again, right? But क्योंकि almost 70% यहाँ पे हमारा जो है एसएल आ चुका है, सॉरी गैप फिल कर चुके हैं हम लोग almost 70% यहाँ पे. That is the reason being I have exited my trade and booked around 27,000 rupees in this particular trade, right? We entered this trade at 274, exited at we entered this trade at 474, exited it at 529, which is almost 530, right? So booked around 55 points in this particular trade, and we had a stop loss of 45 points ka, right? So yeah, we have totally made more than what we risked. हमारा सुबह जो risk था वो था 13,000 rupees का. Now we are closing our screen at a 27,000 rupees profit, right? And from now onwards, what I'm going to do is any rupee above 2 lakh rupees, I'm going to withdraw that fund right away, because option buying mein, psychology is the most important thing. Rules, following your rules is the most important thing. And another thing which is the most important for me is withdrawing funds on time. क्यों? क्योंकि फिर ऐसे दिन भी आते हैं, I know कि
कभी कभी मन करता है कि यार बहुत ही अच्छी, बहुत ही कन्विंसिंग ट्रेड हमको यहाँ पे मिल रहा है, एंड अगर मेरे अकाउंट में मोर देन 22 लाख का फंड रहेगा तो आई बी लाइक कि चलो ठीक है, वो प्रॉफिट हमारे पास जो पड़ा था उसमें से थोड़ा और रिस्क लेके हम लोग कर लेते हैं, राइट? एट द एंड ऑफ द डे आई एम ऑल्सो ह्यूमन एंड आई कैन ऑल्सो मेक मिस्टेक्स, राइट? नाउ हाउ डू आई मिटिगेट ऑल दोस मिस्टेक्स? बाय doing certain tricks and tips, right? So 27,000 rupees is how much we have booked. 1,93,000 is how much funds we have, right? तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आके स्ट्रेट अवे एक 20,000 रुपीज का विड्रॉवल निकाल लीजिए, राइट? आई एम डूइंग इट बिकॉज इट हेल्प्स मी traders, right? I'm doing it because it helps me as a trader, ठीक है? क्योंकि कल का ही अगर आप मार्केट देख लो, कल ही हमने 70,500 का रिस्क लिया, जबकि वी डिसाइडेड कि इस अकाउंट में मोर देन 15 का रिस्क तो लेना ही नहीं है, राइट? So that is the reason being, and I hope you understand my points as well, and I hope this helps you as well. This is it for the day, guys. Closing our screen right away. Yesterday we made a loss of around 17,500. Today we are closing our screen at 27,000 rupees. So this is it for the day, guys. Thank you so much for watching this entire video. Make sure you like the video and comment down whatever doubts you have, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो भी कमेंट कर देना, because it helps me, because it takes efforts to make such videos, and those lovely comments literally help me and motivate me कि चलो ठीक है, कल उठ के वापस एक लाइव ट्रेड करेंगे whenever we trade live, and लाइव ट्रेड करने के लिए it motivates and inspires me kind of a thing. And yeah, this is it for the day, guys. Thank you so much for joining in, and take care.